it's for us, of course, there's going to be disappointment. There is disappointment in the dressing room. And ছেলেরা হতাশ, ড্রেসিং রুম ভর্তি হতাশা, সাপোর্ট স্টাফরাও অনেক হতাশ। তবে বিশ্বকাপ ক্যাম্পেইন খারাপ কাটেনি। এখনও আসলে টি-20 বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবিনি। আমাদের সব কিছুই ছিল এই ফাইনাল ঘিরে। এখনও এখানেই আছি। ভবিষ্যতে কি হবে তা নিয়ে আমরা এখনও ভাবিনি। who's going to be there and who's not going to be there. And I think we fell about 30-40 runs short. It's not that আমরা 30 থেকে 40 রান কম করেছি। সন্ধ্যার তুলনায় বিকেলে বল থেমে থেমে আসছিল, খুব বেশি শিশির ছিল না। সত্যি বলতে আমার মনে হয় সন্ধ্যায় বল ভালো ব্যাটে এসেছে। আমরা একটা সময় বাউন্ডারি দেখা পাচ্ছিলাম না, বল থেমে যাচ্ছিল। স্ট্রাইক রোটেট করেছি, তবে বাউন্ডারি হাঁকাতে পারিনি। আমরা চেষ্টা করেছিলাম সতর্ক থেকে যত গভীরে যাওয়া যায়, কিন্তু নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাই। take the game deep, but we kept losing wickets. Felt that we were about 40 runs short. আমরা হয়তো আরো 40 রান বেশি করতে পারতাম। এখন হয়তো মনে হচ্ছে আরো 40 রান বেশি হলেও অজিরা তাড়া করে ফেলতো। তবে 280 থেকে 290 রান বোর্ডে রাখলে ওদের যখন 60 রানে 3 উইকেট পড়ে যায় তখন খেলা ভিন্ন হতে পারত। 240 রান মানে ওরা একটা পার্টনারশিপেই ম্যাচ জিতে নিতে পারে। Got through that initial period. I think you can recognize that Australia is also very good cricket. অস্ট্রেলিয়াকেও কৃতিত্ব দিতে হবে, তাদেরকে অভিনন্দন। তারা আমাদের চেয়ে ভালো ক্রিকেট খেলেছে। আমরা ফেভারিট ছিলাম কারণ আমরা ভালো খেলেছিলাম। তবে অস্ট্রেলিয়াও কিন্তু অনেক ভালো দল। তারা ফাইনালের আগে টানা 8 ম্যাচ জিতেছে। তাই ম্যাচটা যে কঠিন হতে যাচ্ছে এ নিয়ে কোনো সংশয় ছিল না আমাদের। And there is disappointment among the boys and among the support staff. Rohit's really led this team fantastically well. রোহিত অসাধারণ একজন নেতা। সে দুর্দান্তভাবে এই দলটাকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছে। ড্রেসিং রুমে ছেলেদের সাথে সে অনেক সময় ও এনার্জি খরচ করে। যে কোনো আলোচনার জন্য যে কোনো সময় তাকে ডাকলেই পাওয়া যায়। অনেক ধরনের পরিকল্পনা কৌশলই চলতে থাকে। সে এসব বাস্তবায়ন করতে মরিয়া। তার ব্যক্তিগত সময় ও শ্রমের অনেকটাই সে দলের জন্য ব্যয় করে। আর তার ব্যাটিংটাও দুর্দান্ত। সে আমাদের ভালো শুরু এনে দেয়। আমরা ঠিক তার মতোই পজিটিভ ব্র্যান্ড অফ ক্রিকেট খেলতে চেয়েছিলাম। সে এটা করতে মরিয়া হয়েছিল। নেতা হিসেবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চেয়েছিল। টুর্নামেন্ট জুড়ে রোহিত দুর্দান্তভাবে এটা করে গেছে। অধিনায়ক হিসেবে তার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু চাওয়ার থাকতে পারে না। And he wanted to lead by example, and I thought right through the tournament he was quite superb in doing that. And yeah, just I can't speak more highly of him and as a person and as a leader. राहुल भाई, आपने कहा कि 2027 में काफ़ी वक्त है, लेकिन 7 महीने बाद अनदर T20 वर्ल्ड कप है। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। जिस तरह से इस टीम ने कैंपेन चलाया है सीनियर खिलाड़ियों, पहले बात हो रही थी स्पेशली विराट एंड रोहित को लेकर, आपको लगता है कि वट एवर फाइनल रिजल्ट है लेकिन अनदर क्रैक ये ले सकते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, इंक्लूडिंग यू? इस टीम में है वो मादा कि अगले 6-7 महीने फिर से हम? Honestly, मैंने सोचा नहीं है उसके बारे में. I think all our campaign, all our energies were focused on this match, focused on this tournament and focused till here. And I haven't actually given it any thought or have had no plans of what's going to happen in the future. राहुल भाई, पिछला साल जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, हमने 170 रन बनाए थे 20 ओवर में। इंग्लैंड के लिए बहुत आसान था वो चेस करना, और आज हमने देखा कि जब हमने 240 बनाए तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। इसी विकेट पर रोहित आते हैं, वो 30 पे 45-47 बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बल्लेबाज हैं 110 बॉल खेल के 60-65 रन बना पाते हैं, और स्ट्राइक रेट बहुत लो रहता है। तो क्या होता है कि बड़े मैचेस में हम थोड़ा डर कर खेल रहे हैं, हमारी अप्रोच आपको लग रहा है कि ठीक नहीं है, कि क्या इश्यूज़ हैं? ये इश्यूज़ पिछले 3-4 वर्ल्ड कप से हो, एशिया कप से नज़र आ रही है, अगर ये वाला एशिया कप छोड़ दे तो? मैं ये नहीं मानूंगा कि इस टूर्नामेंट में हमने डर कर खेला है। इस फाइनल मैच में भी 10 ओवर में हम 80 रन पे थे। ठीक है, हम लोगों ने विकेट हारे हैं, तो विकेट जब आप खोते हैं आपको चेंज करना पड़ता है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी टैक्टिक कभी कभी आपको चेंज करना पड़ता है। पर और वो हमने इस पूरी टूर्नामेंट में दिखाया। जब वहाँ पे इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने कुछ विकेटें खोई थी, तो हमने थोड़ा अलग तरीके से खेला। आपको खेलना ही पड़ता है। आप फ्रंट फुट क्रिकेट ज़रूर आप शुरू करते हैं, और इस मैच में भी, फाइनल में भी हमने डर के कुछ खेला नहीं है क्रिकेट। ऐसी बात हुई कि ज़रूर बीच के ओवरों में उन्होंने काफ़ी अच्छी विकेट बॉलिंग की, हमारी 3 विकेटें भी गिरी थी, तो एक कंसोलिडेशन पीरियड का ज़रूर बनता था उस टाइम पे। पर जब हम सोचते थे कि अभी थोड़ा अटैकिंग खेलेंगे या पॉजिटिव खेलेंगे, आगे जाके मारेंगे, तो हमारी विकेटें गिर गई। तो आपको फिर से बिल्ड करना पड़ता है। जब भी आपको एक पार्टनरशिप होती है आपको बिल्ड करना पड़ता है। जैसे आपको उनकी जो बैटिंग थी, आपने यही देखा कि एक समय था जहाँ पे
और हेड खेल रहे थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया, पर वो आउट नहीं हुए तो वो खेलते गए। ऐसी होती है कि अगर आप विकेट खोएंगे बीच में तो फिर आपको फिर से रीबिल्ड करना ही पड़ता है, पर ऐसा नहीं कि हमने शुरुआत की थी कि हम डिफेंसिव खेलेंगे। Rahul, there was obviously mass hysteria building up to the final. People were excited, but 100,000 people left disappointed tonight, and many more are going to bed disappointed tonight around the country. What would your message be to the nation of India after the defeat? No, I think, of course, there'll be some disappointment, but I think they got to watch the Indian team play, have a fantastic campaign right through the World Cup. I said that at the start of the tournament that we'd be traveling to. We eventually went to 11 cities, played in front of our fans, truly grateful for the kind of support that we received. Every single venue we went to was packed. People came out to watch. It was a great privilege to play in front of our fans, and I thought the team did really well and really entertained the fans. So while there may be some disappointments today, I think there's a lot of joy that this team has given to the people over the last couple of months. It was a privilege, I think, this tournament, just to see. I think there's no doubt that the fans of the subcontinent are, truly great fans. They make this game the great game that it is, without a doubt. And what would we do without the fans in the subcontinent? And I think for us to be able to play in front of them and to entertain them and to play the brand of cricket that I think a lot of people really enjoyed watching was a privilege. So yeah, of course there's disappointment. Everyone wants us to win. There's disappointment. There's more disappointment in our dressing room than anywhere else. Just losing Rohit, unfortunately, in that last over to a terrific catch was unfortunate. But I thought we set the base up really well. But then, like I said, we kept losing wickets just when we thought we were consolidating and building a partnership. We lost a couple of wickets in a clump there, and then. Just as we built a partnership with Rohit and Rahul, with Virat and Rahul, Virat got out, and then we had lost a couple more quickly. So I think that we just kept losing wickets. And credit to Australia, I thought they utilized the conditions really well. They utilized the reverse swing a lot. They got a bit of reverse swing when they bowled first, and they used that really well. I thought their fielding was spot on. So they played really well, and I thought they did well to restrict us to 240. राहुल 2 साल साथ में काम करने के बाद रोहित के कि एक होता है कि बड़े एग्ज़ाम्स देना जैसे ये वर्ल्ड कप था, और दूसरा होता है कि टीम बनाना। तो टीम बनाने के हिसाब में ये 2 साल में कहाँ तक टीम आई है, उस हिसाब में आप कितने खुश हो? देखिए, ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो तीनों फॉर्मेट में हम एट द मोमेंट नंबर 1 टीम है, पर मैं obviously for us, honestly, it would have been really nice at this point of time. There is a disappointment of not, winning the trophy. But of course, I think there have been a lot of positives as well, a lot of good results, a lot of good performances. Of course, we would have liked to have won today, but we didn't win. And I thought overall, I thought it's been a really good World Cup. Rahul, the Rohit we have seen through this tournament on the field has been very calm and composed. In his many press conferences, he's been humorous, light-hearted. You must have seen the other side in the dressing room, especially today. How emotional and how disappointed is he? Yeah, of course he's disappointed, as are many of the boys in the dressing room. It wasn't, there were a lot of emotions in that dressing room. It was tough to see as a coach because I know how hard these guys have worked, what they've put in. The sacrifices they've made. So it's tough. It's tough to see that as a coach because you get to know these boys personally. You get to see the effort they put in, the hard work that we've put in over the last month, the kind of cricket we've played. But that's sport. That happens, it can happen, and the better team won on the day. And I'm sure that, the sun will come up tomorrow morning, we'll learn from it, we'll reflect, and we'll move on, and as will everyone else. That's what you do as sportsmen, you have some great highs in sport and you have some lows in sport, and you keep moving on. You don't stop, because if you don't put yourself on the line, you don't put yourself in games like these, you don't experience the great highs, and neither do you experience the great lows. And if you don't do that, you don't learn. It's not that, I didn't feel at any stage going into this game that there were any nerves or the guys were intimidated by the game or they were concerned about the game. I think they were looking forward to it. We were excited about the game. I thought there was energy, and the mental space the boys were in leading into this particular game was spot on, was terrific. Just on the day we probably didn't execute, and Australia played better than us. Thank you so much. Thanks, guys.